Friends, today topic is why every school should implement NEP 2020. बेसिकली जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हर स्कूल को NEP 2020 क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने NEP 2020 लॉन्च किया था तो उनका विजन बहुत ही बड़ा था, क्योंकि दे वांट टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया। Whatever we are following since a long time, they want to change it. And this is डिमांड ऑफ मार्केट। आप कह सकते हैं कि ये आज की जरूरत है। अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह सकते हैं। और आपको पता है कि एजुकेशन स्टार्ट होता है स्कूल से, तो ये सारे स्कूल के लिए मस्ट है कि पहले वो NEP 2020 इम्प्लीमेंट करें, देन वी कैन फुलफिल आवर विजन, जो भी गवर्नमेंट का विजन है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं NEP 2020 फॉर स्कूल के लिए डिस्कस करूंगा कि NEP 2020 में क्या क्या अच्छी चीजें हैं कि जो एवरी स्कूल मस्ट इम्प्लीमेंट दिस। NEP 2020 लॉन्च किए हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। अगर आप आसपास देखेंगे तो ओनली आई थिंक 10 से 20% स्कूल ने प्रोसेस किया है या इन्होंने कोशिश की है टू इम्प्लीमेंट NEP 2020। स्पेशली रूरल एरिया में आपके 50 या 60% स्कूल ऐसे मिल जाएंगे, सॉरी अर्बन एरिया में, जिन्होंने NEP 2020 के आगे काम करना शुरू कर दिया, इवन वो इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। रूरल एरिया का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम स्कूल है रूरल एरिया में जिन्होंने NEP 2020 के बारे में सोचा भी है या उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। क्योंकि NEP 2020 इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले एवरी स्कूल शुड हैव सम नॉलेज अबाउट NEP 2020। उनको अवेयरनेस भी होना चाहिए कि NEP 2020 में है क्या और वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 को यूनियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया था। और इसका जो मेन विजन था, मेकिंग इंडिया ने ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और अगर देखा जाए तो कुछ प्राइमरी विजन थे। पहला विजन था कि रिवैप द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड एंजॉयबल, transforming India by providing high quality education for all. And the NEP 2020 stressed the importance of universal access to quality education for all the children from the ages 3 to 18 years, aim to achieving 100% gross enrollment ratio in preschool to secondary level by 2030। मीन्स गवर्नमेंट का एम क्या था? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अभी भी नियरली 30% स्टूडेंट हाई स्कूल के बाद ड्रॉप कर जाते हैं, मीन्स उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो पहला गवर्नमेंट का एम ये है कि ये जो ड्रॉप आउट का रेशियो है उसको कम किया जाए। दूसरा, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव किया जाए। मीन्स बच्चा जब प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल पे जाता है तो एटलीस्ट हमारे सारे बच्चे वहाँ पे ट्रांसफर हो। ये तभी पॉसिबल है जब ड्रॉप आउट रेट को जीरो किया जाए। उसके लिए ड्रॉप आउट रेट को जीरो करने के लिए गवर्नमेंट ने NEP 2020 में एक कंसेप्ट इंक्लूड किया है, दैट इज फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट अपने स्टडी को कभी भी एग्जिट कर सकता है, कभी भी एंटर कर सकता है, बिकॉज देयर आर सम कंडीशन। बाय दोज कंडीशन स्टूडेंट कैन एंटर एंड कैन exit in any program. Okay, so here NEP is divided in two part, we can say. One is for school and one is for higher educational institute. So here we are discussing about school education. So our mainly focus to discuss NEP for school education, कि स्कूल एजुकेशन में NEP ने क्या क्या चीजें दी हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि भाई चिल्ड्रन सीखेगा कैसे, हाउ चिल्ड्रन विल लर्न। ओके, सो दिस इज
new structure of NEP 2020. One is 5+3+3+4 मीन्स जो पहले हमारा 10+2 सिस्टम था, जो आर्किटेक्चर था, नाउ उसको चेंज करके जो नया हमारा स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। तो बच्चा 5 ईयर स्पेंड करेगा अपना प्री स्कूल और क्लास 1 या 2 में, देन 3 ईयर फॉर grade 3, 4, 5, and 3 ईयर फॉर मिडिल फेज दैट इज 6, 7, 8, and 4 ईयर in secondary that is class 9, 10th, 11 and 12। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेयर है कि भाई पहले हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर, दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था, बेसिकली ये दो पार्ट में था। एक था 10 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में मीन्स 11th, 12th, and 10 years means from class 1 to 10 years. Now new academic structure यहाँ पे आप देख सकते हैं। First part is 5 year, 3 year reserve for Anganwadi, preschool, Vatika, Bal Vatika, from the student ages from 3 to 6। उसके बाद 2 ईयर रिजर्व है हमारा क्लास 1 और 2 के लिए, दैट इज फाउंडेशनल फेज। देन नेक्स्ट वन इज प्रिपरेटरी फेज दैट इज रिजर्व फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे जो क्लास 3 to 5 में बच्चा जब स्टडी करेगा ये उसके लिए है, और 8 से 11 साल बच्चे की एज होगी। और क्लास 6 से 8 के लिए रिजर्व है मिडिल फेज के लिए। एंड देन वी हैव 4 ईयर फॉर सेकेंडरी फेज दैट इंक्लूड क्लास 9 to 12। ओके, सो टिल डेट अभी तक हम फोकस कर रहे हैं कि व्हाट टू थिंक नाउ in new education policy, that is main focus on how to think. So this is differences, and I think in previous slide we have already discussed the differences. So basically जो हमारा existing system था उसमें 10+2 सिस्टम था, इसमें 5+3+4 सिस्टम आ गया। उसमें 2 फेजेस थे, इसमें 4 फेजेस आ गए। उसमें हम क्लास जो 6 साल के बच्चे थे, 6 से 18 साल के बच्चे के लिए कवर कर रहे थे। अब यहाँ पे 3 से 18 साल बच्चे के लिए जो एग्जिस्टिंग था उसमें हमारा मेनली फोकस लर्निंग में था, मेमोरी बेस में था। बट इन न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक स्किल टेक्नोलॉजी डिस्कशन। ड्यूरेशन उसमें 12 साल स्कूलिंग था, इसमें अब 15 ईयर हो गया, जो कि इसमें 3 ईयर हमारा प्री स्कूल एंड बाल वाटिका के लिए रिजर्व है। एंड ट्रेडिशनल एकेडमिक लर्निंग एंड टीचिंग था, अब उसको नाउ वी हैव न्यू अपडेटेड एकेडमिक स्ट्रक्चर दैट डिफरेंशिएट करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एंड जो एग्जिस्टिंग था उसमें कोई भी वोकेशनल एजुकेशन नहीं था। प्लस बट इन न्यू एकेडमिक सिस्टम क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है, कुछ वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है, कुछ चीज़ें सीख सकता है, जैसे गार्डनिंग हुआ, कारपेंटरिंग हुई। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन student caliber. In existing academic structure, there is no any facility to choose the subject, but now in a new academic system, a student can choose subject. Okay, and also there is some changes in assessment, and also they have implemented academic bank of credit. So basically, this is a place where institute can store student academic performance. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज है दैट इज फाउंडेशनल फेज दैट इज रिजर्व फॉर 3 to 8, जिसमें हमारा प्री वाटिका आंगनबाड़ी इंक्लूड होता है, प्लस क्लास 1 to 2 इंक्लूड होता है। और ये बेसिकली इसमें जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनकी एज 3 to 8 ईयर्स होगी। ओके, तो बेसिकली दी इस जो स्टेज है हमारा फाउंडेशनल फेज, इसका जो मेन फोकस होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्निक, और बच्चों से हमें एक्टिविटी या प्ले बेस्ड लर्निंग, ताकि इसमें बच्चा थ्रू दी प्लेइंग, थ्रू दी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से चीज़ों को सीख सके। तो इसमें टीचर बेसिकली
Teacher can use toys, storytelling, games, and experiential learning method to develop basic numeracy, literacy, and life skill. Now, second is that is preparatory phase that is reserved for class 8 to 11 years that include the classes third to fifth grade. एंड ये बेसिकली इस फेज का जो फोकस है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग विद सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस आर्ट सोशल साइंस with play and activity was interactive learning, and also it gradually introduced subject like speaking, reading, writing, physical education, language, art, science, and mathematics. Now middle phase that is reserved for 11 to 14 years, जो कि इंक्लूड करता है क्लास 6 to 8. इसमें बच्चों की एज होगी 11 to 14 years. एंड बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा क्रिटिकल लर्निंग, ऑब्जेक्टिव एक्सपेंसिव लर्निंग इन साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस. Okay, now this is most important phase that is final phase, that is secondary phase. So the final phase is comprised of 4 years. This group covers the student of ages 14 to 18 years. It includes class from 9 to 12, and this phase mainly focus on the depth coverage of concept. Okay, two phases, class 9th and 10th and class 11th and 12th, and this phase also focus on greater flexibility in subject wise critical thinking, analytical thinking, and career preparation. And this phase student will have the option to choose subject across the stream as like arts, commerce, and sciences. So basically student किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है टू फर्दर स्टडी. नाउ बात करते हैं कि भाई चूज सब्जेक्ट का मतलब क्या है. तो देखिए अभी तक जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था वहां पे कोई भी बच्चे को फैसिलिटी नहीं थी कि अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकता था. बट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी देयर इज ए फैसिलिटी कि स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट एज पर देयर चॉइस. ओके, so basically there will be 8 groups from 9 to 12th grade where student can choose their preferred subject in the last 4 years of school: humanities, mathematics, computing, vocational education, physical education, art education, social sciences, and interdisciplinary subject will be grouped in 8 categories. And these 4 years from 9 to 12th will be divided in two groups. One is 9th and 10th, and 11th and 12th. In the first phase, 9th and 10th, science, social science, and humanities will be taught, while in the second phase, 11th and 12th, will be training in history, physics, and language specific. And the semester system will be follow up from the classes 11 and 12, and whereas 9th and 10th will be follow the previous annual mode of assessment. Means जो classes 11 12 में उसमें हम semester system include होगा as per new education policy. And talking about classes and exam pattern, so preparatory to middle phase till it is standard हम बात कर रहे हैं कि every weekday in the preparatory and middle stages must always begin with a 15-25 minutes assembly, and classes broke down in 40-minute segment, and if subject required a block period the class will last 80 minutes, and before moving on to another subject student will have a 5-minute transition period to prepare for their classes, and the schedule to include a 15 minutes snack break and 45 minutes lunch break, and there will be no assembly on Saturday, and lunch will last an hour. And from 9th standard to 12th standard, again work days will commence at 25 minutes assembly, even though their classes last 50 minutes, and their overall class time will be 100 minutes. Means if your teacher required a block period, so time can be extended to 100 minutes. And same, the student are given 5 minutes to prepare for the next lesson during the transition period. Even though the lunch break has been extended to 55 minutes, they have not been given any extra refreshment time. And there will be also no Saturday assembly. Moreover, there will be additional enrichment period in these classes. The student will now have longer school day as a result. It is designed for the student to use the additional time for the coursework subject matter exposure. Now,
Now let's understand the examination pattern and classes. So NEP 2020 specified that the student will only sit for the exam in class third, fifth, and other classes. Assessment in all the other year would be consequently transferred to a regular and constructive format that might be more performance based to enhance knowledge and development by checking higher order skill, including critical thinking analysis and conceptual clarity. No changes in examination pattern from the classes 9th and 10th. It will be follow the existing framework, means that is annual system. And there will be semester system for the classes 11th and 12th, allowing students for appear for the exam when they feel ready. And board exam will be conducted twice a year, and a student can appear for the courses they have completed or feel confident with. And board exam question to include both objective and descriptive type. Okay. Now there's another concept that is three language policy. So basically, the new education policy has focus on the use of mother tongue or local language as the medium of instruction till class 5, while recommending it continuous till 8 and beyond. It totally depend upon the environment and school also. New education policy recommend that all students will learn three language in their school under the formula. At the least two of the three languages should be native to India. Means if a student कोई भी स्टूडेंट मुंबई में पढ़ रहा है, so if he is learning Marathi and English, so he or she will have to choose to learn another Indian language. Okay, so that can be Hindi, that can be Sanskrit. The language learned by the children will be choice of state, region, and of course the student themselves. कि मीन्स स्टूडेंट क्या सीखना चाहता है वो भी डिपेंड करेगा. तो तीन लैंग्वेज में दो लैंग्वेज इंडियन नेटिव की होनी चाहिए. And English will be not imposed but taught as a second language. Sanskrit will be offered at all level of schooling alongside other classical language like Tamil, Telugu, and more. And a student will be encouraged to learn three languages under the three language formula, at least two of them being Indian language. And also high quality textbooks, including science, will be made available in home language like in Punjabi, Hindi, Sanskrit, Tamil. In cases where home language textbook material is not available, the language between the teacher and student will be still remain the home language wherever it is possible. Now, focus on foundational literacy and numeracy. The policy recognized the foundational literacy and numeracy classes in India, where a significant number of children in primary school are unable to read or do basic arithmetic. So basically, the goal is to ensure that every child achieve foundational literacy and numeracy skill by grade 3. Now, talking about universal access early childhood care and education. So this policy basically recognize the importance of early childhood education and impact on the later learning. So there are various factors which need to be considered as like universal access for children of 3 to 6 years, access to free, safe, high quality education at Anganwadi and preschool Badika, and flexible multi-level place-based activity and inquiry-based learning should be provided on the early stages. And the for age group of 3 to 8 divided into part from 3 to 6, that is reserved for the Bal Badika and primary, and 6 to 8 in class 1 and 2. So uh, for universal access, it is must कि आंगनबाड़ी और जो प्री स्कूल में इसमें टीचर अच्छे प्रोवाइड किए जाएं ताकि बच्चों का डेवलपमेंट उस हिसाब से हो सके. अगर टीचर अच्छे होंगे देन एजुकेशन भी अच्छी होगी. क्योंकि जनरली हमने देखा कि आंगनबाड़ी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी टाइप का होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पर इम्पोज करता है, इस पर फोकस्ड है कि गुड टीचर शुड बी प्रोवाइडेड इन प्री वाटिका एंड आंगनबाड़ी
stages. Okay, now again, this is very much important. This is also for higher education कि curriculum and pedagogy reforms should be implemented. जो अभी तक हमारी रिमेंबर बेस्ड एजुकेशन था, now that is shifted to the application based. Means जो भी हमारा करिकुलम है या जो भी हमारा टीचिंग पेडागोजी है, दैट शुड बी रिवाइज एंड दैट शुड बी checked and then implemented. So रिडक्शन इन सिलेबस कंटेंट टू अलाउ फॉर डीपर लर्निंग, क्योंकि बहुत सारे आपको सिलेबस मिल जाएंगे जिसमें कुछ चीज़ें हम ऐसी पढ़ते हैं जिनका लाइफ लॉन्ग कोई यूज नहीं होता है, तो दैट शुड बी रिमूव. वी शुड प्रोवाइड गुड कंटेंट एंड ऑल्सो focus on the critical thinking. Classes should be interactive, and also schools should promote the experiential learning, so the student can learn many things by visualizing, by thinking. And also mental and physical health, that is most important thing which NEP focused. Annual health checkup for all the students, that is mandatory. And also school should hire counselor in the school complexes to counsel the student if any student feeling any anxiety or something else. And also students should provide a facility where student can reduce their weight of school bag. Means only student carry those book which are important. Otherwise कुछ बुक हमें लाइब्रेरी में या कहीं स्टूडेंट को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि बच्चा वहां पर रख सके, वही किताब वो घर पे ले जाए जिसे उन्हें होमवर्क करना हो, कुछ चीजें करनी. अदरवाइज बाकी चीजें स्कूल में ही रहे ताकि उसका लोड कम हो सके. जो भी डिसेबल बच्चे हैं, स्कूल शुड बी फोकस, प्रोवाइड द फैसिलिटी देयर, एंड इंक्लूसिव एंड केयरिंग कल्चर इज शुड बी डेवलप एट द स्कूल. नाउ सो बेसिकली इंडिया का फ्यूचर इस पॉलिसी पे बहुत डिपेंड करता है. अगर ये पॉलिसी फुली इम्प्लीमेंटेड होती है तो डेफिनेटली इंडिया कैन बी फ्यूचर लीडर. ओके, so also increased emphasis on mathematics and computational thinking, and this all the things should be included during the school study. Multi languages, we have already discussed okay, this is policy of three language. Okay, now talking about gender, yes, there should be no gender discriminations. Okay, we should provide the education to both of the gender, and also gender society should be a integral part of curriculum, and also school should be focused on the bridging the gender gap and provide equal opportunity to all the student. And this is very much important टीचर एजुकेशन. और इसमें एक जो डेटा है वो बताता है कि 13% ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर इन द इंडिया आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड. तो बेसिकली जब भी हम टीचर की बात करते हैं, जो भी स्कूल है, तो स्कूल का जो भी मैनेजमेंट है फोकस करना चाहिए कि जो भी टीचर हायर करे दे शुड बी गुड. ओके, अब ये 4 year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री विल बी मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग बाय 2030, and focus on merit based selection of teacher and promotion, and also the performance of teachers should be monitored regularly. Okay, and now holistic progress cards, this is also very much important. uh, प्रॉपर्टीज ऑफ एनएपी 2020. अभी तक क्या होता था कि जो भी बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, बेसिकली दैट कंटेंट्स ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस, बट एनएपी 2020 इंपॉर्टेंस दे रहा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. मीन्स अगर कोई बच्चा करिकुलम में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट शुड बी ऑल्सो रिवॉर्डेड. इफ समवन इज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, दैट शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड. हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो अगर बच्चा कहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उस बच्चे की परफॉर्मेंस को भी we have to consider. Now, there is a National Assessment Center. Parak will be stabilized to assess a student and standardize academic benchmark across the country.
And the center will focus on assessing high order thinking skill and will have track learning outcomes of each student. And equity and inclusion, we have already discussed. There should be, uh, there should be no gender discrimination, and also education should be provided to each and every student. And if there is any disabled student, so that is also eligible for getting that particular education. And also is support for the gifted student. And there are many students, we came to know कि yes, they are very gifted and talented. So teachers should also focus on such student to develop their future. Okay. And now technology is very much important. Every school must include the technology, and also provide technology training to all the teachers so teacher can manage. Because आपने लॉकडाउन के टाइम देखा होगा कि सारे स्कूलों ने टेक्नोलॉजी का बहुत ही यूज किया है, तो हर टीचर को टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों के बारे में पता होना चाहिए. एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज इंक्लूडेड इन NEP 2020. वोकेशनल एजुकेशन मीन्स क्लास 6 के बाद बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है, वोकेशनल एजुकेशन में एडमिशन ले सकता है. मीन्स student will be exposed to various vocational skills such as carpentry, electrical work, gardening. जो भी स्कूल प्रोवाइड कर सकता है वो कर सकता है. इसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई 2025 तक एटलीस्ट 50% स्टूडेंट टू हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन ड्यूरिंग देयर schooling. Multidisciplinary learning, yes, student can choose any subject. They can study in multidiscipline, and this is very much important. School infrastructure, अगर आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो सारी फैसिलिटी मिल सकती है. अगर नहीं है तो school must focus on school infrastructure and resources also. So setting up a ball bond for the children of all age group to partake in art related, career related and play related activities, enable of sharing of human and infrastructure resources, effective governance of school, development of long term and short term plan, utilize capacity of school to be used as a samajik chetna केंद्र to promote social and natural and voluntary activities. So there are many things which can be included in school infrastructure and resources. And also standard setting and accreditation, जो भी स्कूल की परफॉर्मेंस है that should be assessed. So there are various organization which can assess your school performance. So this is also very you know uh, गुड थिंग. तो स्कूल इसके लिए अपनी एक कमेटी बना सकता है. वो कमेटी टाइम टू टाइम स्कूल के परफॉर्मेंस, टीचर के परफॉर्मेंस को एसेस कर सकता है, एंड दे कैन प्रिपेयर रिपोर्ट. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दे कैन प्रोसीड फर्दर. नाउ बात होती है कि भाई NEP यू नो फुली कब इम्प्लीमेंट होगा. तो दिस विल टेक टाइम. हियर also you can see this is message of UGC chairman. So this is all uh, good things which are in NEP 2020, and this is reason. Then I am saying yes, every school must implement NEP 2020 in their school. So thank you for watching this. Thank you.